और दोस्तों, जिस तरह के आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं सोनम महाजन साहिबा। मैडम, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। Thank you so much for inviting me to your show. थैंक यू, थैंक यू। मैडम, आज आपसे बात करनी है, ज़ाहिर बात है, सिक्योरिटी पे, फॉरेन पॉलिसी पे, पाकिस्तान भारत पे। मैडम, ये बताएं कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैंने थोड़ा ट्रेंड मॉनिटर किया इंडिया के अंदर, और वो ट्रेंड ये था टू इग्नोर पाकिस्तान। ठीक है। अगर कोई फॉर इंस्टेंस, अगर आपको याद हो कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान वो जो भी ट्वीट कर रहे हैं, इंडिया का जवाब ही नहीं आ रहा। ना मोदी साहब जवाब देते थे, ना अमित शाह साहब देते थे, ना फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर बात करते थे। इवन के एट टाइम्स फॉरेन ऑफिस भी रिस्पॉन्ड नहीं करता था। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मोस्ट रिसेंटली ऑब्जर्व किया है कि wherever Dr. Jaishankar goes, particularly internationally or even nationally, he talks about Pakistan. अमेरिका गए, पाकिस्तान की बात शुरू कर दी। अभी ऑस्ट्रेलिया में है, तो उन्होंने कंप्लेन की कि जी, और वेस्टर्न ममालिक को कंप्लेन कर रहे हैं कि जब हमें असले की जरूरत थी तो आप देते नहीं थे, लेकिन हमारे नेक्स्ट डोर डिक्टेटर थे तो आप उनको जो है वो असला देते हैं। सो हाउ डू यू सी दिस ट्रेंड इन इंडिया के अंदर? ये क्या ट्रेंड है? बल्कि अमित शाह साहब जो थे, उन्होंने रिसेंटली, आई थिंक ही वाज इन बारामूला, वहां पे भी कहा कि मुझे लोग कहते हैं इंडिया से बात करो, हम पाकिस्तान से सॉरी बात करो, हम नहीं करेंगे। तो आप ये क्या ट्रेंड देख रही हैं कि पाकिस्तान के बारे में इतना क्यों इंडिया का जो फॉरेन ऑफिस है वो डिस्कस, इंडियन सरकार क्यों डिस्कस कर रही है? पहले तो बिल्कुल इग्नोर था और खामोशी थी। क्या समझ रहे हैं कि पाकिस्तान वेस्ट के करीब हो रहा है, तो उसको तोड़ने की कोशिश है? और हाउ डू यू सी दिस? आई थिंक हमारे फॉरेन ऑफिस ने आपकी जो ब्लॉग्स हैं उनको देखना शुरू कर दिया है और वो काफ़ी इस चीज़ से उनको दुख हुआ है कि आपको ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आ रही कि भारत जो है वो पाकिस्तान को इंटरनेशनल फोरा पे इग्नोर कर रहा है। ठीक है। पहला तो मुझे लगता है कि यही बहुत बड़ा रीज़न है कि चीमा साहब को ये चीज़ पसंद नहीं है, तो लेट्स स्टॉप डूइंग दिस। अच्छा, कमिंग टू द रियल क्वेश्चन, जयशंकर साहब ने पाकिस्तान की बात इस कॉन्टेक्स्ट में की है बिकॉज ही वाज आस्क्ड अ क्वेश्चन अबाउट रशिया। ठीक है। इंडिया में फॉर सम टाइम नाउ इट्स बीन अ पॉलिसी कि हम पाकिस्तान के बारे में बात नहीं करेंगे। इनफैक्ट आपके यहाँ पे इस चीज़ को लेके काफ़ी लोग दुखी भी हैं कि इंडिया जो है किसी तरह से पाकिस्तान की मेन स्ट्रीमिंग नहीं होने दे रहा। इस पे मैंने कुछ दिन पहले ट्वीट भी किया था कि इफ़ यू आर रिलाइंग ऑन एन एडवर्सरी टू मेन स्ट्रीम यू, देन योर फॉरेन ऑफिस हैज़ अ लॉट ऑफ एक्सप्लेनेशन टू मेक। बिकॉज आपकी मेन स्ट्रीमिंग तो आपको खुद ही करनी पड़ती है। कोई दूसरा मुल्क स्पेशली जिसके साथ आपके रिश्ते भी अच्छे नहीं हैं, वो तो आपको मेन स्ट्रीम नहीं करेगा। वो तो कोशिश करेगा जितना आपको वो इनविजिबल कर सके एट द इंटरनेशनल फोरम्स। आपने ऑस्ट्रेलिया की बात की तो आपको पता होगा कि भारत से ये सवाल बार बार पूछा जा रहा है कि हम जो हैं रशिया और यूक्रेन के इशू पे जो हैं हम एब्सटेन क्यों कर रहे हैं वोट करने से भी और कोई एक कैटेगोरिकल एक स्टैंड लेने से भी। तो इसका सिंपल जवाब यही है कि यू डू यू, एवरी अदर कंट्री इज डूइंग व्हाट इज़ गुड फॉर इट। तो हमारी जो पॉलिसी है हम वही फॉलो करेंगे चाहे वो किसी को अच्छा लगे या नहीं अच्छा लगे। एंड बहुत सारी ऐसी भी कंट्रीज़ हैं जो नेटो का हिस्सा होके भी एक क्लियर पोजीशन नहीं लेती रही हैं। हालांकि अब उनका जो रिसेंटली जो है वो ओपिनियन थोड़ा सा तब्दील हुआ है फॉर देयर ओन वेस्टेड इंटरेस्ट्स। We will come to that also. But we are doing this because it suits us, and it's true that United States of all the countries has been supporting military dictatorial leaders like Zia-ul Haq in Pakistan for their own vested interests. अब आप ये भी कह सकते हैं कि उस टाइम इंडिया और कोई अमेरिका के रिश्ते जो हैं वो इतने स्ट्रांग नहीं थे, बट वी विल सर्टनली नॉट फॉरगेट दैट कि जब हमें ज़रूरत थी तो हमारे साथ कौन सा मुल्क है जो खड़ा था। एंड ऑफ कोर्स हम रशिया के अननेसेसरी एग्रेशन को भी कंडेम करेंगे एज एंड व्हेन इट इज़ रिक्वायर्ड, अगेन इन द कैपेसिटी ऑफ अ फ्रेंड, बिकॉज आप खुद नहीं चाहेंगे कि ऐसा एक मुल्क जो आपका दोस्त मुल्क है वो गलत रास्ते पे जाए या उसकी इंटरनेशनल स्ट्रीमिंग हो या आइसोलेशन हो। इवन दो रशिया पे जितनी भी सैंक्शंस लगी है इट हैजंट रियली मेड इट टू मच डिफरेंस फॉर देम, बट वी विल try and tell each other whenever we go wrong. We also expect the same from the Russians. They are our
all-weather friend, unlike some other countries which are treated as friends by some other countries, but they don't stand by them when it's actually required. So we have had a history of standing by each other, and we will take everything into account कि जो शुरुआत हुई रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट की उसकी वजूहात क्या थी, where did it all start from. You have to take everything into account. It's not that it happened overnight. It was building up over months. The CIA was aware of it, the Russians were aware of it, the Ukrainians were aware of it. And now, when Russia has expressed an intention to de escalate, I think जितने भी यूक्रेन के एलाइज हैं उनको कोशिश करनी चाहिए कि वो इस डी एस्केलेशन में यूक्रेन को सपोर्ट करें, ना कि वो आग में घी डालने का काम करें. तो मैडम क्या देखती हैं आपके आज भी मैं देख रहा था डॉक्टर जयशंकर ने ऑस्ट्रेलिया में डिफेंड किया है कि जो रशिया से हम वेपन्स ले रहे हैं आप क्या समझती हैं कि रशिया विल कीप डिफेंडिंग रशिया इवन एट द कॉस्ट इन केस हाइपोथेटिकली स्पीकिंग जिसकी पॉसिबिलिटी भी थोड़ी सी नजर आ रही है इन सम स्क्वेयर्स कि even if the West tries to downgrade some sort of relationship with India or West prop ups Pakistan as an equivalent to India क्योंकि एक तरफ तो ये है ना कि पाकिस्तान को और ऊपर लेके आओ और पाकिस्तान की बात करो जस्ट टू जैसे ना पिंच करने के लिए इंडिया को बिकॉज फॉर क्वाइट सम टाइम इंडिया हैज बीन सक्सेसफुल कि इंडिया ने तमाम ग्रेट पार्ट्स को कहा कि भाई ये पाकिस्तान और इंडिया का कश्मीर मसला आपने बीच में नहीं आना लेकिन आप क्या समझती हैं कि क्या जो एट दिस कॉस्ट इंडिया ये करता रहेगा या कि द पॉलिसी कैन चेंज एंड I don't think there is a cost to that. I mean, see, like I said, हर कोई अपने वेस्टेड इंटरेस्ट से बाउंड है, चाहे वो इंडिया हो चाहे वो वेस्ट हो. आई एम ग्लैड कि आपने खुद ही एक्सेप्ट किया कि वेस्ट जो है वो पाकिस्तान को प्रॉप अप करेगा. सो आई एम ग्लैड यू हैव दैट अंडरस्टैंडिंग दैट यू आर गेटिंग यूज्ड इन द प्रोसेस. अगर वेस्ट इज़ रियली वॉरिड अबाउट पाकिस्तान तो सबसे पहले तो जिस तरह की एड आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस टाइम में व्हेन a disaster of epic proportions is unfolding and has unfolded in the recent past in Pakistan, it is not happening जिस तरह की support आप expect कर रहे थे. All they are doing is giving statements, ठीक है, probably to tell India that look, we just like we have you as the main player in the China containment policy, we also have Pakistan, which we can probably use to unsettle you. So I think it will not go beyond statements. एक स्टेटमेंट वहाँ से आएगी, एक स्टेटमेंट हम दे देंगे, बट इवेंचुअली जो हमारे कॉमन इंटरेस्ट हैं उनको वेस्ट भी परसू करेगा, हम भी परसू करेंगे. और जो कंट्रीज़ जो ज़्यादा डिपेंड करती हैं एक्सटर्नली अपने निज़ाम को चलाने के लिए या फिर अदरवाइज जिनकी फाइनेंशियल डिपेंडेंस बहुत है वो इस प्रोसेस में यूज़ होंगे. सो सबसे बेहतर तो ये होता कि इंडिया एंड Pakistan primarily should take advantage of the fact that now the world power is literally shifting to Asia. So you should try and be a part of that growth story instead of getting used. Because, see, let's be very pragmatic here, Qamar. Uh, we did come to an understanding on Kashmir, right? And your generals, for some time now, they've been speaking about burying the past and moving on towards geoeconomics. So they have also thought through this. Over the years, क्या होता था कि Pakistan army was seen as a hindrance to peace. अभी ऐसा लग रहा है कि गुड सेंस हैज़ प्रिवेल्ड ओवर द पाकिस्तान आर्मी एटलीस्ट एट द लीडरशिप लेवल. बट जो आपके जो पॉलिटिशियंस हैं वो अपनी पार्टी पॉलिटिक्स को लेके जा रहे हैं इंटरनेशनल फोरम्स पे. दे आर नॉट रियलाइजिंग कि हम इस प्रोसेस में यूज़ हो रहे हैं. आई रिमेंबर जब तालिबान टुक ओवर आई एंड यू हैड अ शो एंड यू डिड नॉट क्वाइट अप्रिशिएटेड व्हेन आई सेड कि अभी आपको जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं बड़ा ज़्यादा सपोर्ट कर रही हैं बिकॉज उनको अपने जो नेशनल्स हैं उनको अफगानिस्तान से निकालना है. आज भी कुछ कंट्रीज़ हैं जो आपको उसी चीज़ के लिए शायद थोड़ा बहुत इधर उधर लॉलीपॉप दे दें कि हम स्टेटमेंट दे देंगे, बट दैट्स नॉट हाउ फॉरेन पॉलिसी वर्क्स. Eventually, what matters is कि जब इंडिया abrogated 370 and 35A, तो ये जो कंट्री स्टेटमेंट देती हैं इनका स्टैंड क्या था? Did they stand by Pakistan or did they stand by India?
they all, I mean most of them stood by India. ज़्यादा से ज़्यादा किसी ने statement दी होगी, वो भी अपने घर पे दी होगी, जितने उनके ambassadors हैं, they all said it is India's internal matter. So today, in today's time, see, money is very, very important. What you offer to the world is very, very important. You are in a different position when you go to the world stage with something to offer, and you are in a different paradigm altogether when you go to a world forum with an intention to seek assistance. So all of us should try कि हम अपने आप में इतने ज़्यादा काबिल बने, इतने ज़्यादा सेल्फ रिलायंट बने कि कोई दूसरी कंट्री हमारी फॉरेन पॉलिसी को ना तो डिफाइन कर पाए, ना तो वो हमें किसी प्रोसेस में यूज़ कर पाएँ। एंड आई होप कि जो आपकी जो आपकी सियासतदान हैं, they take a cue from what the military leadership has been trying to tell them for a while, and they stop playing with people's sentiments by, you know, offering them false assurances and creating issues where there are none. तो मैडम मैं आपकी इस बात से तो एग्री करता हूँ एंड आई हैव दिस व्यू कि ये जो बात है कि फॉर सम टाइम फॉर टेक्निकल रीजंस फॉर शॉर्ट टर्म रीजंस जो वेस्टर्न ममालिक हैं वो पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे बट फॉर लॉन्ग टर्म इंडिया एंड द वेस्ट हैव वेरी स्ट्रॉन्ग टाइज। ये जो बात आप कर रही हैं पाकिस्तान को यूज करने की कि जी वो पाकिस्तान को यूज करें, इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ा तबका है वो ये समझ रहा है that India will be the theater of war for the next competition between the West and the China. आप क्या समझती हैं? Isn't it going to be कि आज जब भी उन्होंने देखें हमें तो उन्होंने इस्तेमाल किया, हम तो बड़े सस्ते में इस्तेमाल हो गए, मैं तो ये कहता हूँ। Yeah. Either it was bringing Taliban into the power, making madrasas, fighting war against terror, बहुत ज़्यादा हमने नुकसान करवा लिया, at the end of the day बातें भी करवा ली, they made us the scapegoat, I accept it. लेकिन आप नहीं समझते कि ये जो वेस्ट एंड चाइना का ये जो क्या हम कहेंगे गुत्थम गुत्था होनी है दैट द थिएटर ऑफ द वॉर विल बी इंडिया और समहाउ अगर इंडिया को इतना ज्यादा मिलिट्री पावर दे रहे हैं 2008 से लेके 2016-17 तक 18-19 अभी तक कर ले तो मोर देन जो है ना वो 18-20 अरब डॉलर का इंडिया वेपन ले चुका है अमेरिका से। तो और इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी जो है वो आ चुकी है तो आप नहीं समझते कि इंडिया इज द नेक्स्ट थिएटर ऑफ द वॉर with all that weaponry या क्या आप समझते हैं कि the theater of war will be somewhere else? लेकिन इंडिया के अंदर बहुत बड़ा तबका ये समझता है कि the India is being used. आप कैसे देखते पहले तो आई वुड लाइक टू करेक्ट यू, हमें कोई कुछ दे नहीं रहा है, हम खरीद रहे हैं, ठीक है? हमें कोई हैं? Obviously जो that is what ऑफ I कोर्स mentioned वी the money as या well. Okay. या एंड it is about defending yourself and not being an aggressor. India doesn't have any history of being an aggressor कि दूसरे मुल्कों पे war खोल दी and you know because nobody comes out looking good out of that situation. We have full understanding of that war is the last option that we want to choose, be it with Pakistan, be it with China, unless it is thrust upon us, then we are more than happy to fight it. But I don't know where that understanding of yours is coming from, because there are also sections in India which do not support the current dispensation. तो उनको कुछ लोग हैं ऑफ कोर्स जिनका ये व्यू हो सकता है कि मतलब ये जो गवर्नमेंट है ये बड़ी अग्रेसिव है और इनकी जो जो भी इनकी पॉलिसीज़ हैं दे कैन यू नो समहाउ लीड टू कन्फ्रंटेशंस, बट आई थिंक वी आर मेकिंग वेरी वेरी कैलकुलेटेड मूव्स। इनफैक्ट रिसेंटली इंडिया में इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा मजम्मत भी हुई फॉरेन ऑफिस की कि जब आपको पता है वोट करने की बारी आई UNGA में अबाउट um, an inquiry into the Uyghur, genocide and whatever is happening in China, India abstained from voting. A lot of people in India in power echelons or otherwise in strategic circles or otherwise like observers, they felt कि शायद it was a good opportunity for us to have gone like all guns blazing and this was the time to attack China. But we do not let emotions take over us when we are speaking or acting at important forums, because these are actions that you cannot undo. You know, everybody will remember what you did. And sirf hum nahi the, even Ukraine, imagine a country which is completely depending on the US today, also abstained from voting against China.
तो आई डोंट थिंक हमने किसी तरह से भी किसी को भी ये इंडिकेशन दिया है दैट वी आर गोइंग टू बी अ थिएटर ऑफ वॉर फॉर एनीबडी ऑफ ऑल द कंट्रीज इन दिस रीजन. We've been one country. I'm not talking of China, of course, because China and US उनका अपना एक आज की डेट में अपनी उनकी ग्रेस चल रही है. But of all the countries in this region, we are somebody who's never let a foreign fighter plane land on our land and strike another country, or we've never been a base for anyone, and I think we intend to be that way only. हम अपना दिफा करेंगे जहाँ पे हमें ज़रूरत लगेगी, but at the same time we are not up to get used by anybody, and I think you of all the people should know that जब भी हमें रशिया के ऊपर सवाल किए गए हैं, we've been able to justify our position कि हम किसी दूसरे के वॉर में अपनी नाक नहीं घुसाना चाहते. Just because Europeans feel that way, or Western powers who have had a colonial past, they think that this region is somehow answerable to them, कि उनके जो conflicts हैं उसमें हम जो हैं एक पार्टी बन जाएं just because it is their interest. That's not going to happen. हम दूसरों की वॉर में यूज़ होने के लिए नहीं बैठे हैं. We are here to make our own story. We are here to create our own history, and not at somebody else's expense and not at our people's expense. हमें बिल्कुल भी हम इस रास्ते पे कभी भी नहीं जाएंगे जिससे हमारी जो आवाम है उसका नुकसान हो, या कोई आए और कारपेट बॉम्बिंग करके चला जाए. We've got nothing to do with others' circus. In fact, हमारे चाइना के साथ इतनी प्रॉब्लम्स हैं उसके बावजूद we are trading with them, and it is going to stay that way only. And with dialogue, we've been able to de-escalate the situation at the LSE. That's how you do it. जहाँ आपको बोलना है आप बोलें, but जहाँ आपको नहीं बोलना है, you should have the courage to abstain yourself and just chill. And that's what we've been doing. सो मैडम आपने भी थोड़ी देर पहले कहा कि क्वेश्चन भी साथ में मैं डाल रहा हूँ. आपने थोड़ी देर पहले कहा कि इंडिया जो है अपनी पोजीशन जस्टिफाई कर रहा है. व्हाट डू यू थिंक हाउ मच इंडिया इज इंडिपेंडेंट इन इट्स रिलेशंस विद रशिया? जब प्राइम मिनिस्टर मोदी को पुतिन के सामने बैठ के ये बात करनी पड़े कि भाई ये वॉर जो है ना इस वक्त अच्छी नहीं होती, इन दीज टाइम्स वॉर्स आर नॉट गुड. तो आप बेसिकली वो वेस्ट को कर रहे हैं, सिग्नलिंग कर रहे हैं कि भाई हमने उसको कह दिया. एंड वो थोड़ा एससीओ में गई और उसके बाद राइट आफ्टर दैट यूएन में तमाम वेस्टर्न लीडर ने प्राइम मिनिस्टर मोदी की स्पीच को कोट किया कि देखें उसका. अभी इंडिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस लेके यूक्रेन मजीद पहुंच गया. ठीक है, आप क्या समझते हैं कितना को प्रेशर है और कितनी को आज़ादी है कि आपको जस्टिफाई करना पड़ रहा है और आपको सिग्नलिंग करनी पड़ रही है to the West? Well, you can call it signaling. That's not how we look at it. Prime Minister is the highest diplomat of any country. Now, Mr. Modi cannot behave like Imran Khan, जो अपने खुद के मफाद के लिए, किसी दूसरी कंट्री के साथ हॉर्न्स लॉक कर ले विदाउट थिंकिंग कि इसकी हमारे अवाम के लिए क्या इम्प्लीकेशन होगी. यूनाइटेड स्टेट्स इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. रशिया इज़ इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर अस, एंड लाइक आई सेड, they have historically been on our side when United States was not. So it need not be seen as signaling like how you would like to see it. It can also be, a fresh perspective to a friend that look, you are going wrong here, and you cannot be defended on this. You have to stop this unnecessary aggression. देखिए रशिया इज़ लाइक ऑफ ऑल द कंट्रीज उनके पास सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स हैं. अभी तक they have refrained from going nuclear, and we hope it stays that way. But you can also see in Europe and in US अब already इसके बारे में बातें होना शुरू हो गई हैं कि what next. अब क्या जो पुतिन है वो कोई न्यूक्लियर वेपन चला देंगे? कैन दिस गो न्यूक्लियर? Biden is also speaking about how it can unsettle the whole world order and it can lead to third world war. I mean जब सोवियट्स ने क्यूबा में अपनी मिसाइल्स बिठाई थी in retaliation to what the US did in Turkey and Italy to basically keep an eye over the Soviet Union. It unsettled the USA in such a frenzied manner. उनको लगा कि पता नहीं क्या हो जाएगा क्योंकि हमारे बगल में मिसाइल्स आ गई हैं. Unfortunately, West का ये problem रहा है कि they have very different yardsticks for themselves and for others. And we are here to change that equation.
We are here to tell them that look, there are powers or countries or whatever you want to call them in Asia also who can stand up to you for their own vested interest. We are not indifferent to what is happening in Ukraine, but at the same time, we are not here to toe someone else's line. अगर आज यूक्रेन चाहे तो वो de-escalate कर सकते हैं. And like I said, CIA को तो कब से पता था? They were publishing reports after reports कि Russian army and their military presence is building up around Ukraine. Why did they not stop it in the first place? They are also using Ukraine in their own big game. So we cannot be, someone like Ukraine or someone like I don't know what. I mean, we cannot be a part of that. Or आप जिसको signaling समझ रहे हैं, it's just us, doing ourselves and telling the world this is what suits us. अगर हम रशिया से fuel ले रहे थे, तो क्या जर्मनी until recently रशिया से natural gas नहीं ले रहा था? It's only very recently that they have started to look towards Qatar and UAE for their natural gas consumption. In fact, abhi jaake Germany is leading that, whole entire Russia front in Europe. बहुत ही recently तक तो they were like kind of indirectly defending the Russian actions, if not like anything else. और इस चीज़ को लेके within the NATO nations बहुत debate हो रही थी कि how is that Turkey and Germany वो NATO का हिस्सा होके भी they are not very harsh on Russia when it comes to giving statements and otherwise. तो हर कोई अपना मफाद देख रहा है, तो हम क्यों नहीं देखें? हम तो किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहे ना टू रन आवर कंट्री कि हम किसी दूसरे की ज़बरदस्ती लाइन टो करें. ठीक है, हमारे यहाँ पे भी प्रॉब्लम्स होती हैं एंड वी आर एबल टू डील विद देम. पीपल हैव बीन, other countries have also helped us, but that was not like we going to them with a bowl and saying please help us, otherwise क्या हो जाएगा, हमारे न्यूक्लियर वेपन्स को कोई कंट्रोल कर लेगा और फिर पता नहीं दुनिया में क्या हो जाएगा. We did not create a frenzy. Whatever came to us came out of mutual respect and love, and we have also likewise helped other nations, gave them vaccines and whatever we could do in our own humble capacity. So I would say please थोड़ा सा अपने आप को इस dehyphenate the Pakistan equation from this whole scenario. It's very important that you look at this whole thing very objectively and actually appreciate the Indian foreign policy in a rational manner. See how India has played out this whole thing. If you think like a Pakistani, I'm sure, of course, you would not be able to appreciate it. But if you think as a rational person, as a global citizen, you will be able to see that India has done exceptionally good. India has done exceptionally good. वो obviously and India's power has been recognized. इसमें तो कोई शक नहीं है. But मैं तो नहीं बात कर रहा पाकिस्तान की लेंस से. तो वो तो जयशंकर जहाँ जाते हैं पाकिस्तान की बात करते हैं. कहाँ करते हैं? If you could tell me Yes, examples. let me give you few quick examples. One, अमेरिका गए, जाके कह दिया जनाब के, और सारा जाके कंप्लेन शुरू कर दी वेस्टर्न मीडिया को कि भाई आप हमारी रिपोर्टिंग नहीं अच्छी करते, आप हमारा इमेज क्यों नहीं अच्छा पोर्ट्रे करते. अभी ये यूएन में गए हुए थे. बिफोर मीटिंग द यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट. Where is Pakistan in this? सुने तो सही ना भाई, सुने तो सही, जरा सुने. Sure. When you are not getting a good reporting on Kashmir, Pakistan is a direct stakeholder है वहाँ. और क्या है? एक बात. दूसरी बात, एंटनी ब्लिंकन से मिलने से एक दिन पहले डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि इन द बायलैटरल रिलेशंस बिटवीन पाकिस्तान एंड द यूएस नोबडी वाज सर्व्ड, किसी को कोई फायदा नहीं हुआ. सो ये जो आप दोनों आपस में ताल्लुक बना रहे हैं, या जो बिलावल भुट्टो को वहाँ पे बड़ा काफी ज्यादा वो मिल रहे, एक दिन बिलावल मिल रहे हैं, अगले दिन डॉक्टर जयशंकर मिल रहे हैं, तो वो बेसिकली इट वाज बीइंग ट्रीटेड कि पाकिस्तान जो है ना, इज इंडिया एंड पाकिस्तान आर एज दे वर इन द पास्ट. फिर वहां पे भी बात की, अभी ऑस्ट्रेलिया में भी आके बात की. इससे पहले घर में थे, एक स्पीच थी, वहां उन्होंने कहा दिया जी कि वो दैट वाज आई थिंक सम अफगान या कुछ और था कि जी हम आईटी एक्सपोर्ट करते हैं, वो टेररिज्म. सो द क्वेश्चन इज, रिसेंटली मैं आपको बता रहा हूँ कि मतलब वो कोई ऐसा फोरम मिस नहीं कर रहे जहां पे वो पाकिस्तान को डिस्कस नहीं कर रहे. मैं तो उसी रेफरेंस में ये बात कर रहा था कि डॉक्टर जयशंकर जो है ही इज फीलिंग लाइक वो थोड़े परेशान लग रहे हैं, या थोड़े इज अंडर स्ट्रेस के हम जो रशिया पॉलिसी है उसमें कहीं हमें स्नब किया जा रहा है. दिस वाज व्हाट आई वाज रेफरिंग.
श्योर पहले तो जो आपने यूएस मीडिया की बात की आई डेंट सी एनी मेंशन ऑफ पाकिस्तान देयर इट वाज मोर between the US and India that of course the western media has been a little unfair to India, we all feel that. I don't know what is troubling them so much, maybe they are uncomfortable with how India is growing and of course जब कोई मुल्क जिसको आप यूज़ करना चाह रहे हैं अगर वो अपनी ऑटोनॉमी को और ज़्यादा मजबूत कर लेता है या अपने आप अपनी इकॉनमी को वो बेहतर करता जाता है तो इट इज़ अ रीज़न फॉर यू टू गेट अनसेटल्ड एंड वी डू अंडरस्टैंड द वेस्टर्न मीडियाज कवरेज ऑफ इंडिया. We have always been a Soviet ally, and many countries have taken advantage of it, and they have capitalized on it and saying that, oh, look, India is towards Russia, and please you support us, and we will be your garrison state in the Asia. So I mean, of course, it's an open secret that the West has always, Western media has always had a very unfair view of India. आज की बात नहीं है ये, ऐसा नहीं है कि अब नया कुछ शुरू हुआ है, ये हमेशा से ऐसा ही रहा है. Pakistan has forever been an ally of the West. We have always tilted towards Russia. दूसरी बात आपने की कि उन्होंने एंटनी लिंकन। लिंकन से जब वो मिले और तब उन्होंने जिक्र किया पाकिस्तान का. वेल आई हैव नॉट कम अक्रॉस दैट बट एट द सेम टाइम आई हैव सीन मैनी पाकिस्तानीज कंप्लेनिंग दैट व्हाई इज देयर प्राइम मिनिस्टर एंड फॉरेन मिनिस्टर has like only been talking about Kashmir, talking about India, and talking about so many other things. I think they should have paid more attention to what is happening in Khyber Pakhtunkhwa. They should have drawn world's attention to the TTP rather. It would have really helped them not in not getting their ministers, sitting ministers, abducted. Instead of speaking too much about Kashmir. फिर आपने बात की कि तीसरा कोई वो किसी यूनिवर्सिटी गए थे पता नहीं गुजरात में, वहाँ उन्होंने बात की. तो ये इंडिया में एक बहुत ही कॉमन डिबेट है. हम इंटरनेशनल फोरम्स में जाके पाकिस्तान की बात नहीं करते बिकॉज वी थिंक इट डजंट कमांड दैट काइंड ऑफ इम्पोर्टेंस. बट येस इंडिया में ये डिबेट होती है. आप देखें आपका जो पूरा चैनल है चीमा साहब, अगर आप खुद अपना ही चैनल उठा के देखें तो यू आर ऑलवेज डिस्कसिंग अबाउट हाउ इंडिया इज ग्रोइंग एंड वेयर वीव गॉन रॉन्ग. नथिंग रॉन्ग इन इट. आई मीन आई रियली अप्रिशिएट इट. ऑफ ऑल द पीपल आई वुड अप्रिशिएट इट दैट you are taking that route to introspect wherever required. That's how a true patriot should be. तो ऑफ कोर्स हमारे यहाँ डिबेट होती है कि एक टाइम पे ब्रिटिशर्स इस खित्ते को छोड़ के गए थे एंड एट दैट पॉइंट इन टाइम इंडिया गॉट डिवाइडेड and we had the same kind of resources and we've been able to make better use of those resources than how Pakistan has played it out. तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है. एंड शायद तीसरी बात आपने की कि अमित शाह ने कश्मीर में बोला कि हम पाकिस्तान की बात नहीं करेंगे, हम we will only speak to Kashmiris. उसमें भी कुछ नया नहीं है. This is what India's policy has been for a long, long time now. आपको लगता है कि पाकिस्तान is an important player. We don't think that way. हमें ऐसा नहीं लगता. हमें लगता है कि it's between Delhi and Kashmir and it should be settled between Delhi and Kashmir. And if somebody wants to be a good observer or what do you say, an enabler of peace, they are more than welcome. If they want to still keep missing the bus, that's okay too. We are happy to let them miss the bus and keep crying for another 75 years. Well, आपकी ज़ाहिर बात है, you have a stated position, लेकिन the world and Pakistan believe that this is between India and Pakistan. This is what Islamabad and Delhi and everyone, even recently US State Department gave a serious statement on this, that this is between India and Pakistan and we really want this to be resolved. German foreign minister ने भी recently यही बात की, जिसके ऊपर Indian foreign office ने बड़ा tough statement दिया. और आप कह रहे हैं कि आप obsessed नहीं है, madam. The question is so simple. डॉक्टर जयशंकर अलहदा अमेरिकन से कंप्लेन करते हैं दैट व्हाई दिस $450 मिलियन की क्यों पाकिस्तान ने को आपने ये जो ओवरहॉल करने की कैपेसिटी दी है. राजनाथ सिंह साहब ने डिफेंस सेक्रेटरी को खुद कॉल की. राजनाथ सिंह साहब की ट्वीट पड़ी हुई है दैट वी हैव शोन द कंसर्न. तो कंसर्न आप नहीं समझती, कंसर्न इंडिया में है. और अगर आप एंड फॉर हाउ लॉन्ग इंडिया विल कीप, मैं तो चाहता हूँ कश्मीर मसला रिजॉल्व हो, जल्दी बैठे सारा मसला हो, लेकिन एट द सेम टाइम आप कहते हैं कि इट्स अबाउट इस्लामाबाद, इट्स अबाउट दिल्ली एंड श्रीनगर, हम कश्मीर और इंडिया आपस में कर लेगा, लेकिन द वर्ल्ड थिंक्स दिस इज बिटवीन इस्लामाबाद एंड दिल्ली.
तो ये जो राजनाथ सिंह साहब का एंड डॉक्टर जयशंकर साहब का जाके दुनिया में F-16 की बात कर देना, जबकि खुद आप $20 अरब का वेपन्स ले रहे हैं, पाकिस्तान 400 बिलियन की ले ले, तो ये कंसर्न नहीं है, ये इश्यू नहीं है, तो हाउ डू यू रिगार्ड दिस मैटर? Sure. Pehle to I didn't say Delhi, I didn't say India and Srinagar, I said Delhi and Kashmir. Okay, so there's a difference. Second, हमने जो भी weapons acquire किए हैं वो हमने like I said, it is for our own defense, and we don't have the reputation of hosting global terrorists right inside our territory, or producing people like Sheikh Khalid Mohammed, who was the real mastermind of 9/11. So I think the world needs to probably look through this and evaluate this whole history in context to whatever they offer to Pakistan, okay? And also their equation, evolving equation with India, I would say. It is still evolving. We still do not really trust the West completely, and we do not like to put all our eggs in one basket. That is how a smart person works. And talking about, you said ki the whole world recognizes this as some issue where India and Pakistan need to come together. Germany doesn't comprise world, and like I said, Germany has its own vested interests. It is right now leading the entire Russia front in Europe, and मैं सच में मानती कि वो आपका भला चाहते हैं या आपके लिए रियलिटी में वो कोई sympathy रखते हैं if they had offered you a couple of billions of euros, you know, for your situation back home, instead of just giving you a statement which doesn't really make a difference in New Delhi. It will just call for another statement from Delhi, and that's about it. Like I said, when Article 370 was removed, the German ambassador to India said it is India's internal matter and nobody should have a problem with that. आज अगर कोई स्टेटमेंट देता है किसी को खुश करने के लिए, तो आई वुड से कि जो इस खुशफहमी में रहना चाहता है वो, आई मीन उसकी अपनी मर्जी है। हम तो खुशफहमी या गलत फहमी में बिल्कुल भी नहीं जीते। We are real people, we have real goals, and we are pursuing them with all our might and understanding of geopolitics. And geopolitics, like you know, it's ever evolving. सबके जो interests होते हैं वो evolve करते रहते हैं, और likewise उनकी statements भी evolve करते रहते हैं. एंड आपने यूएन की बात की, तो एंटोनियो गुटेरेस जो हैं वो 2009 itself में he has spoken about Kashmir while invoking Shimla Accord. He said, I don't think that the UN resolutions can at all play out in today's Jammu and Kashmir for the simple fact that so much water has passed since 1947. He has already invoked Shimla Accord. So right now, the last I checked, UN was like, you know, the best representation of the world community and not Germany. तो अगर किसी एक कंट्री का कोई फॉरेन मिनिस्टर एक स्टेटमेंट दे देता है आपके फॉरेन मिनिस्टर के साथ खड़े होके कि लुक, आप तो आए थे वैसे बिलियंस लेने, हमने आपको मिलियंस दे दिए और साथ में एक स्टेटमेंट दे दी, अब घर जाओ और सबको बताओ व्हाट अ गुड चैप आई एम, मैं इमरान खान से पीछे नहीं हूँ, एंड यू नो मैंने भी जाके कश्मीर की बात की है और मैं भी बहुत बड़ा मोमिन हूँ. सो या ऑफ कोर्स इट रियली हेल्प्स बिलावल भुट्टो फॉर हिज career. He can really smoothly transition from being an intern to a seasoned diplomat. In that context, it will help him, but I don't think it helps Pakistan in any way. In fact, पाकिस्तान के अगर ये लोग जो हैं वेल विशर्स हैं, जो आपके सियासतदान हैं, तो वो आपकी आवाम को एक क्लियर पिक्चर देंगे कि भाई दिस इज व्हाट इट इज, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, अभी आप बैक सीट लो एंड लेट अस हैंडल आवर अफेयर्स. दैट्स हाउ सीरियस कंट्रीज वर्क. No, अभी बाजवा साहब ने आपको पता है काकुल अकेडमी में ही स्पोक अबाउट पीस एंड यू नो रिजॉल्विंग ऑल द आउटस्टैंडिंग इश्यूज विद नेबर्स इन अ डिग्निफाइड मैनर, and there's so much flack that is coming his way. I mean, I don't see any, I mean, correct me if I'm wrong, and you might not agree with me, and I'm open to, you know, listening to your point of view, but I see a number of Pakistanis, you know, blaming everything on the politicians कि ये इतने you know corrupt है, कुछ नवाज शरीफ करप्ट है, इमरान खान तो जो है वो हमें शिद्दत पसंदी की तरफ लेके जा रहा है. But I, for one, strongly believe, Kamar, that your politician is basically a reflection of you.
He is only doing what he knows the public will like at large. इंडिया में भी जब हम लोग कहते हैं ना कि यार पॉलिटिशियंस बड़े करप्ट होते हैं और ये देखो ये पैसे के बिना काम नहीं करते, who's been spoiling them? जिस दिन आप उनको पैसा देना बंद कर देंगे ना किसी काम करने के लिए और उनको बोलेंगे यू ब्लडी आर अ पब्लिक सर्वेंट, I have elected you. You better do this, or I'm going to use all my means. I'm going to go to social media, and I'm going to expose you. That guy will know his place. एंड आज आप पाकिस्तान में वो टाइम तो नहीं है ना 1970s का वेयर द जनरल्स कैन सिंपली impose martial law. They have also understood the power of social media and you having access to internet. They are already saying कि we are like making a departure from the politics and we don't want to mingle too much with it. अब वो एक अलग बात है वो कितना करते हैं कैसे करते हैं, but at least this is their stated position. This is the best time for the Pakistani public to redeem itself. If they still miss this opportunity and वो इमरान खान जैसे बंदे के पीछे लग के कि वो हमें कोई तब्दीली ला के देगा जो उसने नहीं ला के दी अभी तक एंड आपके मुल्क के सबके साथ रिश्ते खराब करेगा, आज भी लोग अगर उसके पीछे चलते हैं तो आई एम सॉरी, आप 10 साल बाद इमरान खान को बिल्कुल ब्लेम नहीं कर सकते. मैं आपकी बात सही है। मेरा ख्याल है वी शुड लीव इट टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान। मैं इमरान खान का बहुत श्योर. बड़ा क्रिटिकल हूँ कि वो क्या कर अब वो रहे हैं। आपका तो कमर ऐसा है कि फौज का ओपिनियन जैसे जैसे इवॉल्व होता है ना आपका भी इवॉल्व होता रहता है समहाउ देयर इज अ नहीं, क्लियर सिनर्जी देयर. जब नहीं, फौज वाज वेरी प्रो इमरान खान यू आल्सो लाइक्ड इमरान खान अ लॉट, जैसे जैसे उनका ओपिनियन चेंज हुआ आपका भी चेंज हो गया, फिर आप दिस इज बोलेंगे कि लोग कहते हैं जी मैं दिस फौज का बंदा हूँ. this is your बट observation, and there is a freedom of speech in India and Pakistan, and we should let people say whatever they want to say. आप ये कहें या कुछ और कहें, मुझे इससे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन आपकी ओपिनियन आई रिस्पेक्ट दैट। मेरी तो सिंपल सी श्योर. ओपिनियन ये है कि इमरान खान ने जो है वो दुनिया के रिलेशंस पाकिस्तान से खराब किए फॉर हिज ओन पॉलिटिकल इंटरेस्ट, फॉर हिज वेस्टेड इंटरेस्ट। इससे फौज नहीं, मेरे लिए फॉर मी पाकिस्तान इज इम्पोर्टेंट। एक जनरल आएगा, एक वजीर आजम जाएगा। आपने और आपने बिल्कुल सही कहा। अगर आप इंडिया की भी मिसाल ले लें, प्राइम मिनिस्टर मोदी बैक इन 2002 कहाँ पे थे, उनके बारे में क्या बातें थी, बट एट द एंड ऑफ द डे पीपल पिक प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड थॉट दैट ये बंदा हमारा जर्नी जो है वो आगे लेके चलेगा, एंड दैट इज अ चॉइस of the people of India, and this should be respected, and Prime Minister Modi should be respected because he has been chosen by the people of India. मैडम आपने एक बात की, वो एक तो मैं बता दूं कि फॉरेन मिनिस्टर किसी की खुशी के लिए स्टेटमेंट नहीं देते, दे गिव स्टेटमेंट व्हेन इट इज स्टेटेड पोजीशन ऑफ अ कंट्री। तो जो जर्मन फॉरेन मिनिस्टर ने कहा वो हमें खुश करने के लिए नहीं कहा कि आज वो हमें, वो कोई दोस्त थोड़े ही है, मतलब दे आर सिटिंग इन अ पोडियम विद इंटरनेशनल मीडिया इज सिटिंग, तो वो जी पाकिस्तान को खुश करने के लिए। दूसरा मैडम ये बताइएगा, आपने कहा कि शुरू में ही आपकी स्टेटमेंट में था कि वो पाकिस्तान जो वी हैव नॉट होस्टेड, हम होस्ट तो नहीं करते टेररिज्म को एंड ऑल दैट। तो मैडम आपने, इफ यू हैव जस्ट रिसेंटली चेक द अमेरिकन ट्रैवल एडवाइजरी टू इंडिया एंड टू पाकिस्तान, एंड इन बोथ द ट्रैवल एडवाइजरीज दे हैव मेंशन्ड के वहां ना जाइएगा बिकॉज देयर हैव बीन इंसिडेंट्स ऑफ टेररिज्म एंड ऑल दैट। तो आपकी तो ट्रैवल एडवाइजरी हमारी जैसी है। सो मतलब इंडिया इज बीइंग कैटेगराइज्ड, इंडिया इज अ वेरी हाई पार्टनर है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर है अमेरिका का, लेकिन जो ट्रैवल एडवाइजरी है वो तो पाकिस्तान वाली है। सो इसमें व्हाट इज सो डिफरेंट? मैं ये नहीं कहता कि इंडिया और अमेरिका के इस वक्त क्वाड हो, आई टू हो, और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर बड़ा अच्छा कोऑर्डिनेशन है, ट्रेड बड़ी ऊपर चली गई है, पीपल टू पीपल से सो मेनी अदर थिंग्स। लेकिन उन्होंने आपको भी तो वही खड़ा कर दिया। वो मैं अलहदा कहूँ, मुझे क्या फर्क पड़ता है, सो व्हाट, उन्होंने किया तो क्या है, मुझे इसकी क्या परवाह है। हम भी यही कहते हैं, पाकिस्तान भी यही कहता है, बट इंडिया भी तो यही कह रहा है। सो वेयर डिड दे लीव इंडिया, कहाँ छोड़ दिया उन्होंने इंडिया को? डजंट दिस लाइक, लोगों को इससे क्या फील आता है, ये क्या कर रहे हैं हमारे साथ? एंड देन जो जर्मन वाली जो मैं बात कर रहा था मैडम, दैट इज ऑल अबाउट, वो दैट इज अ सीरियस स्टेटमेंट। वो क्या है क्या नहीं है, वो फॉलो अप उसका कुछ नहीं होगा। लेट मी रीड दैट, उसका कोई फॉलो अप नहीं है, ना अमेरिकन से ना यूरोपियन से। आई अंडरस्टैंड दैट, बट फॉर अ मोमेंट टू इग्नाइट थिंग्स, they gave a statement and then they involved India on that. आपने कहा कि वो हमारे कोई दोस्त थोड़ी ना है कि वो ऐसे स्टेटमेंट देंगे, तो मैंने तो ये कहा ही नहीं आपके दोस्त हैं. आई ऑलरेडी सेड they've made a statement for their own vested interest and that's how it works. If somebody reads too much into it, तो joke is on them.
दूसरी बात, I have not come across that for advisory that the US has issued for the whole of India. I think it was for a particular region which is infested with, again, foreign terrorism. On the contrary, the advisory issued for Pakistan is for the whole of Pakistan. And of course, the West can have problems with what is unfolding in India. ठीक है, we are not a perfect nation. हमारे यहाँ पे भी बहुत मसले हैं. We are also very concerned about what keeps unfolding every now and then in the US. अभी 2 दिन पहले ही एक one cop, he took law into his own hand and he killed a teen. And there have been multiple attacks against the Indian community in the US. That also really concerns us. It is not just the in the capacity of the Western powers to take a stock of what is happening in India. We also pretty much observe what is happening around the world. एंड ये एडवाइजरीज तो आप इशू करते रहते हैं बेस्ड ऑन जैसा कहीं पे सिचुएशन जो अगर कोई वोलाटाइल हो, जैसे वी इशूड एडवाइजरी रिसेंटली फॉर इंडियन स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू कनाडा. अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि कनाडा में गलियों में बॉम्ब फट रहे हैं. It doesn't really mean that, right? The Israelis, there's a huge Jewish community in India. आज भी जो उनके synagogues हैं या फिर जो भी उनकी जहाँ पे उनकी रिहाइश है, they are protected by police. I mean, उनके वहाँ पे special protection रहती है to support, to protect them from a particular group which has inherent hate towards the Jewish community. तो ज़रूरी नहीं है कि उस पूरे मुल्क की सिचुएशन खराब हो. कभी कभी क्या होता है, एक एथनिसिटी के लोगों को लेके एक पर्टिकुलर थ्रेट होती है, जैसे अफगानिस्तान में भी था कि अमेरिकन को लेके एक पर्टिकुलर कंटेम्प्ट थी. जैसे अभी पाकिस्तान में इमरान खान साहब ने एक ऐसा सेंटिमेंट बना दिया है कि अमेरिकन को लेके एक लोगों के बीच में एक कंटेम्प्ट है. वो एक्चुअली सच में ही मानते हैं कि अमेरिकन हैव टॉपल आवर गवर्नमेंट एंड इमरान खान, अदरवाइज ही वुडंट हैव गॉन. तो कभी कभी लोग ऐसी एक परसेप्शन भी क्रिएट कर देते हैं, और कभी कभी एक थ्रेट indeed it exists for people of a particular community or for people of a particular ethnicity or of a particular nationality. So I have not come across any blanket advisory that the US has issued for India. Agar वैसा case था, then the United States should stop investing in India. I mean, what I can see is that more and more American companies are coming and investing in India. If we are such an unsafe country, then I think they need to think a lot more. तो जो उनके actions हैं और जो उनके advisories हैं ना, somehow there's a huge gap in there, which itself should be enough to tell you that what politics is being played here. And American ambassador suddenly starts to call Pakistan occupied Jammu and Kashmir as Azad Kashmir. We are pretty much able to see through those small tricks. It happens. People try to send you subtle messages to get some short-term reactions from you. This is how it works. We don't take it very seriously as long as it is not hurting our business as usual. I mean, you cannot keep crying over something. Okay, किसी ने ये statement दे दी है, advisory issue कर दी है. We are not depending on another nation to come and feed our people on a daily basis. कोई कुछ भी स्टेटमेंट दे सकता है, डजेंट मैटर. आप कोई स्टेटमेंट देंगे, आप यहाँ से आपको इक्वल रिएक्शन मिलेगा. मज़ा तो तब है ना जब आपकी इतनी औकात हो कि आपको कोई कुछ कहे तो आप उसको पलट के कुछ कह सको. ऐसे भी लोग हैं जिनको लोग इतना कुछ कह जाते हैं, वो पलट के कुछ कह ही नहीं पाते. So we are happy that at least we are in a position to give as good as we get. बिल्कुल सही कह रहे हैं, पोज़ीशन होनी चाहिए और अगर नहीं है तो इम्प्रूव करनी चाहिए ताकि यू आर रिस्पेक्टेड एंड यू आर ट्रीटेड इक्वली और अनटिल एंड अनलेस ये नहीं होता है ऑब्वियसली वो मुकाम नहीं होता, वो इज़्ज़त नहीं होती है एंड फॉर अचीविंग दैट नेशंस एंड इंडिविजुअल्स मस्ट स्ट्राइव एंड बिकॉज़ दैट इज़ वेयर लोग जो हैं इसीलिए अपने लीडरशिप को चुनते हैं. थैंक यू वेरी मच सोनम. It's always Thank pleasure you. talking to you, sharing thoughts, ideas, and so many people learn from you, and so many people pick your brain. Thank you very much. Thank you, Qamar. Thanks again for having me. We will keep talking. Thank you.